Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bacho, and welcome back to ExamDost. Welcome back to the ESE Officers Series for Engineering Services PYQs. We are live with the lecture number 2 on power electronics. So, yesterday we discussed mainly the problems based on power semiconductor devices. Today we are going to move forward and we will talk about rectifiers, or you can say phase controlled converters. So come on everyone, quickly everybody join. चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए भाई. Everyone join quickly. We are about to start. So let's start. First question. In a GTO is achieved by, in a GTO, turn off is achieved by, I think it should be. In a GTO, turn off is achieved by negative current at the gate. When you apply negative current at the gate, the GTO turns off. Correct? Triac cannot be used in. Triac cannot be used in. Come on, everybody. Triac cannot be used in solid state type of switch. Okay, solid state type of switch, it cannot be used in. Snubber circuit is used in Thyristor for, the snubber circuit is used in Thyristor for, come on everyone, the snubber circuit is used in Thyristor for dV by dt protection, correct? It is preferable to use a train of pulse of high frequency for gate triggering of SCR in order to reduce. Why do we use high frequency pulse in gate triggering of SCR? SCR के गेट ट्रिगरिंग में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? To reduce the size of pulse transformer. Size of a transformer is inversely proportional to F. Which of the following is not an advantage of solid state switching of AC capacitor into AC supply over relay based switching? बेसिकली अगर आप रिले को सॉलिड स्टेट स्विच यानी सेमीकंडक्टर से बनने वाले स्विच से रिप्लेस कर रहे हो, तो इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है? क्या एडवांटेज नहीं है? बोलिए. विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज? लो ट्रांजिएंट. इन केस ऑफ solid state switch. Solid state switch means semiconductor switch. Switching is faster, therefore more transient. जितना तेज आपका स्विचिंग होगा ना, जितना सडन आपका स्विचिंग होगा, उतना ज्यादा ट्रांजिएंट बनता है. द फास्टर और मोर सडन द स्विचिंग इज, मोर इज द ट्रांजिएंट. Most suitable device for high frequency inversion in SMPS is? What is the most suitable device for high frequency inversion in SMPS? Come on everybody, most suitable device? MOSFET. At high frequency always MOSFET is preferred. When cathode of a thyristor is made more positive than anode, if you make cathode more positive than anode, what happens? If cathode is more positive than anode, then what happens? Answer is B. This is reverse blocking. Or reverse bias. When SCR is reverse bias, the outer junctions, that is J1 and J3, are reverse bias, and central junction J2 is forward bias. Very good.
The sharing of voltage between thyristor operating in series is influenced by, सीरीज में जब थायरिस्टर लगते हैं तो उनका वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, हाउ द टोटल वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग द थायरिस्टर डिपेंड्स ऑन, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, बोलिए टी। ठीक है, तो व्हाट डू वी शो, बेसिकली इन सीरीज करंट इज सेम, so when we keep the current as same, then we see what is the voltage across different thyristors. Suppose this is current, this is voltage. So when you talk about the blocking voltage, you keep current same and you see how the voltage is getting shared. How the voltage is getting shared. So basically on the basis of characteristic, the voltage is shared between the thyristors. RC snubber is used in parallel with thyristor 2. Why do you connect a RC snubber circuit parallel to a thyristor? थायरिस्टर के पैरेलल में एक आरसी स्नबर सर्किट क्यों लगाते हैं, बोलो भाई। Why do you connect a RC snubber circuit parallel to thyristor? To reduce dV by dt across it. चलिए, now you have to match the thyristor with the symbol SCR, silicon controlled switch, silicon unilateral switch, and LASCR. Now LASCR is the first one. पहले वाला LASCR है क्योंकि देखिए इस पे लाइट इंसिडेंट होते हुए दिखाया है. It is showing that the light is incident. Okay. Then simple SCR. Simple SCR is your fourth one. Fourth one is your simple SCR. Okay. So the answer should be D. Now, what is silicon controlled switch? Silicon controlled switch is the third one, which has two gate terminal, and unilateral switch is the second one. So remember the symbol. आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच या फिर सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, आप बस सिंबल याद कर सकते हैं. टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ अ ट्रांजिस्टर डिपेंड ऑन. It is talking about transistor. The turn on and the turn off time of a transistor will depend on, come on everybody, on what parameters does it depend on? It depends on capacitance. Okay. Basically, अगर कैपेसिटेंस लार्ज होगा, इफ कैपेसिटेंस इज लार्ज, it takes more time to charge and discharge a capacitor. Okay, therefore T on and T off increases. Now match the column beta, match the column. मैच कीजिए बेटा. टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर, यहां पे ना एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए, एक थायरिस्टर. ओके. टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर इज सम ऑफ डिले टाइम एंड राइज टाइम. टर्न ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर डिपेंड्स ऑन जंक्शन कैपेसिटेंस. अभी अभी मैंने बताया ना,
अगर कैपेसिटेंस लार्ज है तो टर्न ऑन टर्न ऑफ होने में ज्यादा टाइम लगेगा. रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट, दैट मींस dig/dt. This will affect the delay time. And if you remove the gate pulse, thyristor goes back to off state. If you remove the gate pulse before it reaches the latching current, it will turn off. So the answer will be A, 2143. Okay, 2143. Clear? Next, critical rate of change of forward voltage is the value of dV/dt at which the device just goes into conduction without a gate pulse. Thyristor go to a state of conduction with a sharp rate of change of forward voltage in absence of gate pulse even before breakover voltage limit is reached. बोलो भाई. Assertion reason है. What happens? Assertion reason question. Come on beta, what will happen? The answer is A. देखो ये क्या कह रहा है. पहला स्टेटमेंट समझना. If your dV/dt is high, then transistor will go into conduction without gate pulse. That is your dV/dt triggering. तो ये कह रहा है critical value is that at the value at which thyristor goes into conduction without gate triggering. Correct? dV/dt का critical value वो value है जिस value पे thyristor conduction में पहुंच जाएगा बिना किसी gate pulse के. Now second statement is explaining if your sharp rate of change of forward voltage, अगर dV/dt sharp है यानी dV/dt large है, if the voltage is sharp, that means the slope is high, dV/dt is high, so thyristor can turn on even if your voltage is less than breakover voltage. तब आपका thyristor बिना breakover voltage के भी turn on हो सकता है. This is exactly the concept of dV/dt triggering. कि अगर dV/dt large है तो आपको बेटा ब्रेक ओवर वोल्टेज एक्सीड करने की जरूरत ही नहीं है. विदाउट इवन एक्सीडिंग ब्रेक ओवर वोल्टेज योर डिवाइस विल टर्न ऑन. नेक्स्ट, द टर्न ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्टर ग्रेड SCR आर नॉर्मली इन द रेंज ऑफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टर ग्रेड SCR? कन्वर्टर ग्रेड SCR का मतलब होता है SCR whose speed is suitable for use in phase controlled converter. ठीक है. तो जो फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर होते हैं बेटा वो यूजुअली 50-60 हर्ट्ज पे चलते हैं, यानी वहां ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती, तो वहां टर्न ऑफ टाइम आपका अधिक होता है. तो योर फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर और रेक्टिफायर जनरली बेसिकली वर्क एट 50-60 हर्ट्ज. so the frequency is low, we do not need a very high speed, so the turn off time is generally large. A triac is what kind of a switch is triac? What kind of a switch is triac? A triac is a 3-terminal bidirectional switch. 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? MT1, MT2 and gate. Main terminal 1, main terminal 2 and gate. Current can flow in either direction. THD of AC supply input current of rectifier is maximum for. Total harmonic distortion किस situation में maximum आएगा? Total harmonic distortion of AC current is maximum for
So total harmonic distortion basically represents the amount of harmonic. It is asking कि किसके अंदर हार्मोनिक ज्यादा होंगे. So it is asking in which configuration will the harmonics be highest in case of rectifier. So the answer is D. Single phase rectifier always has more harmonics. Single phase rectifier always has more harmonics as compared to three phase rectifier. So what actually happens is, as you increase the pulse number, harmonics reduce. ठीक है, पल्स नंबर बढ़ाने से हार्मोनिक कम होते हैं. So therefore single phase rectifier has more harmonic. Now बेटा सिंगल फेज रेक्टिफायर के भी दो ऑप्शन है, with the inductive filter and with the capacitive filter. So inductive filter will smoothen the current waveform. Whereas capacitor smoothens voltage and creates more ripple in current. कैपेसिटर की वजह से ना करंट में काफी रिपल और डिसकंटिन्यूटी आती है. तो इसीलिए हार्मोनिक ज्यादा कब होंगे? जब आपका कैपेसिटिव फिल्टर आएगा. इंडक्टर तो जो है करंट के ग्राफ को स्मूथ करेगा, बट कैपेसिटर करंट के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी पैदा करेगा. कैपेसिटर विल क्रिएट डिसकंटिन्यूटी इन द करंट, वेयर एज इंडक्टर will smoothen the current waveform. In case of voltage, if it was talking about voltage harmonic on the DC side, on AC side there is no voltage harmonic. First of all, on AC side we connect a pure sinusoidal source. So on AC side only harmonics are there in the current. On DC side there are harmonics in the voltage. ठीक है, तो डीसी साइड में अगर वोल्टेज हार्मोनिक की बात करता तो ए ऑप्शन, एसी साइड में करंट हार्मोनिक की बात करेगा तो डी ऑप्शन. नेक्स्ट, इन थ्री फेज फुल वेव एसी टू डीसी कन्वर्टर द रेशियो ऑफ आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी टू द सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी. थ्री फेज फुल वेव एसी टू डीसी कन्वर्टर द रेशियो ऑफ आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी टू द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी. Yes, the answer is C. If it is a three-phase full wave converter, it is a 6-pulse converter. Now, what is pulse number actually? It is ratio of input time period by output time period. So pulse number means number of times, a number of cycle of V naught in one cycle of V in. Okay. Next, characteristic feature of discontinuous conduction compared to continuous conduction in a two-pulse single-phase bridge converter are.
टू पल्स सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर में डिसकॉन्टिन्यूअस का कंपैरिजन करना है कॉन्टिन्यूअस से। तो इन discontinuous you have larger average output and larger ripple. Why larger average output? Because V naught does not become negative. डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन वैसे होता है ना, जैसे फ्री व्हीलिंग डायोड आया या रेजिस्टिव लोड आया तो V नॉट को कभी नेगेटिव नहीं जाने देता. If V naught never becomes negative, maybe due to a freewheeling diode or a resistive load, then the area under V naught increases, so average output increases. And why larger ripple? Due to discontinuity. If the current waveform is discontinuous, it will have more harmonics or more fluctuation. So answer is A. Next, the function of bleeder resistor in a power supply is bleeder resistor in a power supply is, what is the purpose of a bleeder resistor? The answer is A. देखो जैसे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्या होता है, धीरे धीरे जब आपका खून बहता है, तो ऐसे ही ब्लीडर रेजिस्टर क्या करता है, इट discharges the stored charge on a capacitor in C filter. कैपेसिटिव फिल्टर में जो स्टोर्ड चार्ज होगा आफ्टर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड. जब आप सर्किट को बंद कर देते हो, ना, तो कैपेसिटर पे कुछ जो स्टोर्ड चार्ज बचा है उसे रिमूव करने की जिम्मेदारी होती है ब्लीडर रेजिस्टर की, फॉर ऑपरेटर सेफ्टी. So it is the responsibility of bleeder resistor to remove the stored charge on a capacitor after you turn off the supply in order to save the operator. They must not get a shock. झटका नहीं लगना चाहिए. ठीक है. Next question. The input voltage for the given full wave rectifier is 230 volt AC. What is PIV across D1 and D2? What is PIV across D1 and D2? Come on everyone, what is PIV? In a full wave rectifier, two VM. Okay. So 50 0 50 means each half of secondary has तो VM हो गया 50√2 and PIV will be 100√2. तो जब भी आप सेंटर टैपिंग लिखोगे ना तो वोल्टेज ऐसे ही बताओगे कि सेंटर का वोल्टेज 0 है और उसके दोनों तरफ 50 है. The center voltage is 0 and on either side we have 50 volt. That is the meaning of 50 0 50. The average output voltage, this question is related to chopper. Average output voltage of a flyback converter. This flyback converter we study in SMPS. Switch mode power supply. V0 is 24 volt at R equal to 0.8. Duty ratio 50%. Frequency is given. On state drop is given.
transformer ratio is given. We need the efficiency of the converter. Come on, everyone. We need the efficiency of the converter. Flyback converter is basically isolated buck boost converter. चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं बेटा. ओके, अगर फ्लाईबैक कन्वर्टर की बात करें तो यहां पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एक ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड पे स्विच होता है, सेकेंडरी साइड कंटेन्स अ डायोड. Now this is a load. Okay, so it is giving us that V0 is 24 volt. It is also giving us the duty cycle. It is also giving us the duty cycle. Duty cycle is 50%. The switch drop is 1.2. Diode drop is 0.7. Switch drop is 1.2. Diode drop is 0.7. This resistance is 0.8. Okay. So what is the voltage across secondary winding? (24.7 volt). Okay. Now input voltage is, refer this voltage on primary side plus switch voltage. NP by NS. NS by NP is 0.25. So 4. 96, 96, 98.8. 100 volt. The input voltage is 100 volt. What about the output power? V0 square by R. 720 watt. 720 watt is the output power. Okay. Now it wants us to find the efficiency. It wants us to find the efficiency. So हमें input current की जरूरत पड़ेगी. (30 ampere). Input current I0 into NS by NP. (7.5 ampere). So efficiency 720 by 750. 96%. So the answer is B. 96%. Okay. Answer is B. Clear हो गया? B आएगा 96%. The use of multi-phase rectifier in place of a single phase rectifier results in, सिंगल फेज की जगह अगर आप मल्टी फेज यूज करते हैं तो क्या होगा बताइए? द V0 विल इंक्रीज. ओके, जैसे V0 3 phase is 3 VML by pi cos alpha.
and V naught single phase 2 Vm by pi cos alpha. So more V naught in case of 3 phase. And the harmonics here are 6k plus minus 1. Here the harmonics are triplen harmonic as well as 6k plus minus 1. So in single phase harmonics are more. That is why we wish to increase the number of phases so that we get higher output and we get lower harmonic. Number of phases बढ़ाने से V naught भी बढ़ता है, harmonic भी eliminate होते हैं. A single phase two pulse converter feeds the load with insufficient smoothing. Insufficient smoothing means L is not very large. The load inductance is not very large, but conduction is continuous. Now, if you increase the resistance, what will happen? If you increase the resistance, what will happen? If you increase the load resistance, what will happen in this case? So, load time constant decreases. So, inductor charges and discharges faster. अगर ज़्यादा चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी तो more ripple, and if fully discharges then there is a possibility of discontinuous conduction. तो जो large inductance पे आपका continuous आता है ना, at large load inductance there is continuous conduction. The reason behind that is the time constant is very large. So inductor does not discharge. अगर टाउ बहुत हाई होता है तो डिस्चार्जिंग ना के बराबर होती है, तब आपको कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मिलता है. ओके. Ripple factor of a single phase rectifier with R load, forward bias dynamic resistance is 100, RMS value of secondary winding voltage is 330. We need the ripple factor. We need the ripple factor. Full wave rectifier. What is V naught M? It is maximum voltage across the supply RL plus RD. मैं ब्रिज रेक्टिफायर नहीं ले रहा, मैं फुल वेव रेक्टिफायर ले रहा हूं. फुल वेव रेक्टिफायर जो कि 2 डायोड से बनता है. करेक्ट, जिसको मिड पॉइंट कन्वर्टर भी आप कह सकते हो. इट इज मेड यूजिंग 2 डायोड्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिड पॉइंट कन्वर्टर. व्हाट इज V naught एवरेज? 2 V naught M by pi. So form factor is RMS by average pi by 2 root 2. Voltage ripple factor so this will be 0.482. This is the standard value 0.482. Input power factor of a converter may be defined as the ratio of. How do you define the input power factor of a converter? What is the basic formula for input power factor? Answer is A. Input power factor is P average or real power mean is average.
तो एवरेज पावर बाय टोटल आरएमएस वोल्ट एम्पियर. Volt ampere means V into I. A half wave rectifier is using an ideal diode and an input voltage of 20 sin omega t. Average and RMS output voltage. हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज और आरएमएस बताना है. बोलिए. वेरी इजी क्वेश्चन बेटा. V average is 10 volt. B. Lowest frequency AC component in the output of half wave and full wave rectifier. Lowest frequency AC component. The lowest frequency AC component is always fundamental. इसने लोएस्ट हार्मोनिक नहीं पूछा, कंपोनेंट का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. वो तो फंडामेंटल ही होगा ना. अगर हार्मोनिक पूछता तो मैं सोचता सेकंड या थर्ड हार्मोनिक आएगा. करेक्ट. इफ इट वाज आस्किंग हार्मोनिक आई विल थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड और द थर्ड हार्मोनिक, बट इट इज आस्किंग द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एसी. So what is the answer? B. In half wave rectifier, output frequency is same as input frequency. In full wave rectifier, output frequency is 2 times input frequency. So answer is B. Conventional diode rectifier circuit have low harmonic. Passive technique are used to reduce the current. THD in conventional rectifier require large transformer or reactor. कह रहा है जो कन्वेंशनल डायोड के रेक्टिफायर सर्किट होते थे ना, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी वाले हार्मोनिक आते थे. तो जब पैसिव टेक्निक आप लगाते थे तो उसमें ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर का साइज बड़ा होता था. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट रीजन. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोअर ऑर्डर हार्मोनिक, frequency is low, so size is large. Okay. Size of a transformer is always inversely proportional to frequency. तो रिएक्टर या ट्रांसफॉर्मर का साइज फ्रीक्वेंसी से अपोजिट चलता है. तो अगर लो फ्रीक्वेंसी आपके हार्मोनिक आ रहे हैं तो आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मर या रिएक्टर लगाना पड़ेगा. For large power output, multi-phase rectifier are used along with filter to reduce level of harmonic by increasing the fundamental frequency in multi-phase rectifier. ज्यादा आउटपुट के लिए multi-phase rectifier लगते हैं फिल्टर के साथ. Okay, to reduce the level of harmonic by increasing the fundamental frequency in just a minute. पे लार्ज पावर आउटपुट के लिए मल्टी फेज रेक्टिफायर लगते हैं. सही बात है, लेकिन कनेक्शन मेरे हिसाब से ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. इसका जो दे रखा है वो स्टार रेक्टिफायर है. मेरे हिसाब से इसका ब्रिज रेक्टिफायर आना चाहिए. चलो स्टार रेक्टिफायर ये याद रख सकते हो कि स्टार रेक्टिफायर बनेगा. स्टार मतलब कि एक तरह से ना सारे डायोड एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे.
जब आप 3 फेज के ऊपर जाते हो ना, तब आप स्टार रेक्टिफायर यूज करते हो। स्टार रेक्टिफायर माने जैसे कि अगर 6 फेजेस हैं तो 6 डायोड आपके ओरिजिनेट होंगे या 6 थायरिस्टर एक सिंगल पॉइंट से। फॉर अ स्टार रेक्टिफायर all the diodes or all the thyristor originate from a single point that is above 3 phase. While finding various factor of single phase diode rectifier, the TUF of a half wave rectifier, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर का TUF बता दो। ये डायरेक्टली आपको पता होगा बेटा, 0.286 ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। So what is transformer utilization factor? Is DC power, VSR, ISR. DC power is VDC, IDC. VDC is VM by pi. IDC is VM by pi R. Supply voltage RMS is VM by root 2. Supply current RMS is same as output RMS. ISR is same as I naught R, which is V naught RMS by R. V naught RMS for half wave rectifier is VM by 2. 2 root 2 by pi square. So 0.286 it will come out. चलिए next. Reverse recovery time of a power diode. Reverse recovery time of a power diode. Come on everybody. So QR. So 2QR by DI by DT under root A. Next, a single phase full wave bridge rectifier is fed from 220 volt 50 hertz supply. It contains 4 diode, load resistance, large inductance. Average DC output. Average DC output. So V naught average two root 2 by pi is approximately 0.9. (198 volt C). Okay. Next, function of a capacitive filter in a Grates diode bridge rectifier is to, कैपेसिटिव फिल्टर क्यों लगाओगे डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में? To reduce harmonics in the rectified output signal. So this capacitor smoothens V naught waveform. कायदे से A भी करेक्ट है, क्योंकि जब कैपेसिटर पैरेलल में लगता है ना, when you connect a capacitor in parallel, the DC current goes to load and AC current passes through capacitor. When capacitor is connected parallel to load, current ripple, but I'll still choose C over A. Current ripple passes through capacitor
and DC component goes to load. Okay, DC component will flow into the load and ripple current will pass into the capacitor. The use of an inductive filter in a rectifier circuit provides satisfactory performance only when? When do you use an inductive filter in a rectifier circuit? Inductive filter when the load current is low, and when load current is high, you use capacitive filter. Capacitive filter when the load current is high, तब capacitive filter, low current पे inductive filter. Match the column. Match the rectifier with the average output voltage. Uncontrolled half wave. 4. No, 1 minute. Uncontrolled है ना? 3. Controlled half wave. 4. Controlled full wave. 1. Uncontrolled semi-controlled. Sorry. Controlled full wave. Semi-controlled is 1. So this should be 2, but this should be 2 times controlled full wave. So 3, 4, 2, 1. The option. ठीक है, वहां 2 Vm by pi होना चाहिए था. In a thyristor controlled rectifier TCR, the firing angle is to be controlled in the range of this thyristor controlled rectifier, not reactor. So what is the range of alpha in a rectifier? Rectifier में alpha का range 0 से 180. Alpha can be varied from 0 to 180. A single phase full bridge converter with a freewheeling diode feeds an inductive load. The load resistance is given. It has a large inductance. Input is given for a firing angle delay of 60 degree. Average value of diode current. Alpha is given. It is asking average diode current. चलो भाई. What is the average diode current for alpha equal to 60 degree? Cos 60 root 2 by pi is 0.45. 103.53. But it is a freewheeling diode, na? रुको. There is a freewheeling diode also. I naught is V naught by R, 10 ampere. ID average. Now a diode will conduct for an angle of pi minus alpha. Okay. So like alpha to pi, D1, D2, pi to pi plus alpha, freewheeling diode. Then pi plus alpha to 2 pi, D3, D4, again 0 to alpha, freewheeling diode.
So it should be 6.66 ampere. So it should be none of these. None of these आएगा. खड़गपुर यार देखो अच्छा कॉलेज और वीएलएसआई का प्लेसमेंट तो आईटी से लग ही जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है. A six-phase bridge converter feeds the purely resistive load. The delay angle alpha is measured from the point of natural commutation. The effective value of voltage can be obtained when alpha lies in the range. It is a six-phase converter. So what will be the range of alpha? So it should be B. This is in single phase. 0 to 120 आएगा. ठीक है. It should be 0 to 120. C will be valid for 3 phase. When fed from a fully controlled rectifier, a DC motor driving a active load can operate in. When operated from a full wave rectifier or a fully controlled rectifier, it can operate in B. देखो fully controlled converter gives us 2 quadrant operation. It gives us 2 quadrant operation. The current cannot reverse. V0 can be positive or negative. This is motoring, this is braking. और ये ब्रेकिंग का कौन सा मेथड है ना, बेसिकली प्लगिंग, वेयर यू रिवर्स द वोल्टेज बट करंट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन. Next, RMS value of source voltage is V, maximum and the minimum firing angle for a single phase half wave controlled rectifier supplying load with a back EMF of 40 volt. The back EMF is 40 volt. What is the minimum and the maximum value of firing angle? Come on everyone. तो यहां पे हम थीटा निकालते हैं ना, साइन इनवर्स E by VM फॉर लोड विद बैक EMF 40 by √2V. So alpha can be between theta to pi minus theta because device is forward biased from theta to pi minus theta. तो इसी रेंज में अल्फा लाई करेगा, दैट इज सी. इसी रेंज में अल्फा लाई करेगा, दैट इज सी. ओके, क्योंकि आपको पता है आरई लोड के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग थीटा से 180 माइनस थीटा होती है, तो अल्फा भी उसी रेंज में लाई करना चाहिए. अ कन्वर्टर विच कैन ऑपरेट इन बोथ 3 pulse and 6 pulse mode. Which converter can operate in 3 pulse as well as 6 pulse mode? Very easy question. Which converter can give you a 3 pulse as well as a 6 pulse operation? The answer is C. Yes. At alpha equal to 0, this is 3 pulse. And when you increase alpha above 0, it becomes, it is 6 pulse. When alpha becomes greater than 0, it is 3 pulse. In 3-phase semi-converter.
Circulating current inductor is required in a dual converter to. Why do you use a circulating current inductor? डुअल कन्वर्टर के दो मोड होते हैं, सर्कुलेटिंग करंट मोड एंड नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड. व्हाई डू यू यूज अ इंडक्टर? यस, टू लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट. I circulating is inversely proportional to inductance. You limit the circulating current. Very good. In a single phase semi-converter with discontinuous conduction, beta less than pi, freewheeling action takes place for. If beta is less than pi, there is discontinuous conduction. For what duration does freewheeling action takes place? What is the duration of freewheeling action? Zero degree. Since beta is less than pi, V naught never becomes negative. So freewheeling diode does not conduct. पाई के आगे जाता जभी तो नेगेटिव आता. अगर मेरा कंडक्शन पाई के आगे जाता तभी ना नेगेटिव आता. तो आंसर इज डी. A 3-pulse converter is feeding a purely resistive load. What is the firing angle alpha which dictates the boundary between continuous and discontinuous? For a 3-pulse converter, what is the value of alpha, which is the boundary of continuous and discontinuous conduction? Alpha equal to 30 degree. Okay, it is for 3 pulse. This is for 6 pulse. So answer is B. In a dual converter, the circulating current what is the role of circulating current in a dual converter? The answer is B. Sir, how the speed is improved? That is because we do not need to provide any delay between switching of two converter. डुअल कन्वर्टर में दो कन्वर्टर रहेंगे, दोनों के बीच में गैप देने की जरूरत नहीं है भाई. अगर आपके पास इंडक्टर है, सर्कुलेटिंग करंट है, तो कंडक्शन एक कन्वर्टर से दूसरे कन्वर्टर पे स्मूथली ट्रांसफर होता है. When you have an inductor, when you have a circulating current, you can smoothly transfer the conduction from one converter to the other. You do not need a delay. But in non-circulating current, you need to provide a delay. First, you need to turn one converter off. After some delay, you can turn the other converter on. डुअल कन्वर्टर में दो कन्वर्टर होते हैं, तो नॉन सर्कुलेटिंग करंट में पहले एक को ऑफ करेंगे, फिर कुछ देर बाद दूसरे को ऑन करेंगे. Firing angle alpha of a single phase fully controlled rectifier is 30 degree. What is the displacement factor? Very easy. What is the displacement factor? For fully controlled, fundamental displacement factor is cos alpha. So answer is D. Yes. Cos 30 root 3 by 2. For same output voltage which has larger PIV of thyristor. Larger PIV किसका आएगा? For same output voltage.
Which of these will have larger PIV? ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, फॉर सेम V नॉट सप्लाई वोल्टेज has to be more in single phase as compared to three phase. देखो मैं आपको समझाता हूं. You are saying that you need the same output voltage. So here VM1, that is VM in single phase, so anyways PIV will be more in single phase as compared to three phase. PIV will be more in single phase as compared to three phase, and that too in center tab it will be 2 VM, in bridge it will only be VM. सेम आउटपुट वोल्टेज के लिए सप्लाई सिंगल फेज में ज्यादा लेनी पड़ेगी एज कंपेयर टू थ्री फेज, और सिंगल फेज में भी दो कॉन्फ़िगरेशन है, सेंटर टैप्ड और ब्रिज. उसके अंदर सेंटर टैप्ड का ज्यादा वोल्टेज आता है. For a fully controlled line commutated converter functions as an inverter when there is alpha is in the range. How can you make a rectifier behave like an inverter? How can you make a rectifier behave like an inverter? What is the range of alpha? 90 to 180, but there must be a DC source in the load because DC source supplies power to transfer to AC side. सर डी भी तो हो सकता है बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ यार अक्सर पावर एब्जॉर्ब करता है, डिलीवर नहीं करता. अगर मैं इन्वर्टर बना रहा हूं तो आई नीड समबडी टू गिव मी पावर विच आई कैन सेंड टू एसी. इन्वर्टर ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम डीसी टू एसी, तो आई नीड अ सोर्स ऑन द डीसी साइड, नॉट अ लोड. ठीक है, डीसी साइड पे सोर्स चाहिए. इन अ टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर वर्किंग इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट, first and the second quadrant, what happens? In the first and the second quadrant, this is V naught, this is I naught. The load current can be positive or negative. See, very good. Maximum output voltage of a three-phase bridge rectifier supplied with a line voltage of 440. Maximum output voltage of three-phase bridge rectifier supplied with a line voltage of 440. क्या बात है, सी. $594 volt. In a single phase full wave controlled bridge rectifier, minimum and maximum output voltage are obtained at which conduction angle? Minimum and maximum output voltage at which conduction angle?
So because it is asking the conduction angle, maximum V naught means more conduction, more area. Answer should be B. 180 and 0. It is not asking firing angle, it is asking conduction angle. अगर firing angle पूछता ना तो आंसर A आता. It is asking conduction angle. Which of the following are the coefficient for a regulated power supply in expression for change in V naught? For change in V naught. So for delta V naught in a regulated power supply, what are the factors? Stability factor, output resistance, temperature. So stability factor, output resistance, okay, just a minute. Stability factor into delta V in R naught into delta IL and so this is del V naught by del V in, del V naught by del IL, del V naught by del T. So answer is D. 1, 2 and 3. Okay. For a single phase AC to DC controlled rectifier to operate in regenerative mode. Regenerative mode means when it returns the power back to supply. Regenerative mode means power is returned back to supply. Which of the following conditions should be satisfied? What condition should be satisfied? The answer should be C. Okay. So it is acting as an inverter. Now remember, a semi-converter can never become an inverter. Okay. Because V naught can never be negative. Semi-converter only operates in first quadrant or motoring mode. So can never behave as inverter. Okay, so it can never behave as inverter. Only full converter can behave as inverter. A half controlled bridge converter is operating from RMS input of 120, neglecting the voltage drop. What is the mean load voltage at a firing angle of 0 degree and 180 degree? Come on, everyone. It's okay, Aditya bhai. Half controlled bridge converter. Half controlled means this. Cos 180 is -1, so V naught is 0. Cos 180 is -1, V naught is 0.
A 6 pulse SCR converter is connected to 230 volt 3 phase 50 hertz AC mains, controlling a DC drive with a terminal voltage 205, rated current 105. Mu and alpha is given. What is the rating of the shunt capacitor and the power factor? What is the rating of the shunt capacitor and your power factor? तो देखो रियल पावर निकाल लो, V नॉट I नॉट 21.525. Okay. Now, fundamental displacement factor .587. नहीं यार, शंट कैपेसिटर रेटिंग ऑफ द शंट कैपेसिटर 3 फेज सप्लाई दे रखी है, कंट्रोलिंग अ डीसी ड्राइव विद अ टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड करंट कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। वी नॉट तो वैसे निकाला जा सकता था, बट बात ये इसने वी नॉट पहले से दे भी दिया हमको। निकालने के लिए तो हम लोग वी नॉट निकाल सकते हैं अल्फा और म्यू की मदद से, बट इसने वी नॉट दे रखा है हमको। देखो एक्टिव पावर तो सही है अपनी, बात है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अपना यही आता है कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय 2। रिएक्टिव पावर, अगर रिएक्टिव पावर हम पी टैन अल्फा से निकालते, अल्फा वाली रिएक्टिव पावर पी टैन अल्फा से निकालते तो पी के बराबर ही आती।
अब बात है ओवरलैप की वजह से जो रिएक्टिव पावर निकालनी है, वो एक एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर है आपकी जो ओवरलैप की वजह से आएगी। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा, या तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, साइन म्यू बाय म्यू माइनस कॉस म्यू। जब साइन म्यू के नीचे म्यू लिखोगे ना तो इट शुड बी इन रेडियन। तो 18 डिग्री मीन्स पाई बाय 10। तो टोटल क्यू 22.26, पावर फैक्टर 0.695। क्लोजेस्ट आंसर इज बी। तो ये चीज यार लिख लेना अपने नोट्स के अंदर कि ओवरलैप वाले केस में रिएक्टिव पावर कैसे निकलेगी। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट रिएक्टिव पावर विद ओवरलैप। A single phase full converter feeds power to a RLE load R, L and E is given. Source voltage is given. Average value of load current for a firing angle delay of 60 degree. Alpha equal to 60 degree के लिए average load current. So V naught will be for continuous conduction 2 Vm by pi cos alpha. For continuous conduction na RLE load behaves like RL load. For continuous conduction RLE load will behave like RL load. But I naught is V naught minus E by R. So 5.35 ampere. D. Two fully controlled three-phase bridges are connected in anti-parallel across a load to provide reversible DC voltage. They operate in circulating current mode. The peak circulating current is also given. What is the inductance for limiting the circulating current? What is the inductance for limiting the circulating current? Come on, everybody. How do you limit the circulating current? Peak circulating current is 1 minus sine alpha. Okay. अब अल्फा तो दिया नहीं है, we will assume alpha as 0. For maximum output na we will consider alpha as 0. But then it is 57.1. But it is giving us maximum load current.
लोड करंट इज गिवन, बट लोड का वोल्टेज थोड़ी ना इससे आ जाएगा। मैक्सिमम लोड करंट दे रखा है। मैक्सिमम लोड करंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्फा नहीं दिया ना इसने। अल्फा देता तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। देखता हूँ डेटा मिसिंग तो नहीं है सवाल के अंदर। लिमिटिंग सर्कुलेटिंग करंट, वही है ना, पीक करंट क्यों दिया है? अगर अल्फ़ा हम 90 ले लें तब तो ज़ीरो हो जाएगा, और अल्फ़ा अगर मैं 180 ले लूँ तो ये 1 हो जाएगा, 0 और 180 पे। देखो इसमें क्या होता है, अगर कन्वर्टर 1 का अल्फ़ा आप अल्फ़ा लेके चल रहे हो, 180 माइनस अल्फ़ा होगा। अब एज्यूम अल्फ़ा इक्वल टू 0, और V02 क्या होगा, cos 180। तो डेल्टा V0 क्या हो जाएगा, 6 VML बाई पाई, 6 इंटू क्या आएगा, 440√2 बाय पाई। डेल्टा V0, ये भी एक तरीका रहेगा बेटा सर्कुलेटिंग करंट निकालने का। 6 इंटू 440√2 बाय पाई, 6 से 6 कटा, 442.2 इंटू √2 बाय पाई स्क्वायर, तो 315 मिली हेनरी आ गया इससे। जस्ट अ मिनट। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, ICP is shared between two converters. Each converter 3 एम्पियर। अब मैं कह देता हूँ ICP
Vm by XL Vm by XL। किसी भी मेथड से आंसर ही नहीं मैच कर रहा यार। तो फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर एंटी पैरेलल में जोड़े गए हैं, बट अल्फा इसने खा लिया है। हमारे वाले मेथड से भी आंसर नहीं आ रहा था। Vm by 2XL होगा यहाँ पे। फोर 4.4 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। फोर 440 तो आपको 3 फेज वोल्टेज ही दिया है ना। फोर 440 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय पाई, यही आ रहा है यार। और हमारे वाले मेथड से कितना आ रहा था, √3 तो 440 इंटू √2 बाय पाई डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 पाई, √3 VML बाय ओमेगा L 57.1। यार इसका किसी भी मेथड से आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी मेथड से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई भी गिवन ऑप्शंस में से। मैक्सिमम लोड करंट अपने को दे रखा है, मैक्सिमम लोड करंट का कोई यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो 30 एम्पियर आपको दिया है। 30 एम्पियर को अगर हम करें मैक्सिमम लोड करंट, तो एक जन अगर मैं कह दूं 33 सप्लाई कर रहा है, और 40 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 200 पाई डिवाइडेड बाय 33। इसको ऐसे कर लो यार, देखो मैं आपको बताऊं। ईच कन्वर्टर 3 एम्पियर, टोटल करंट ऑफ वन कन्वर्टर 30 + 3 33 एम्पियर। वैसे थोड़ा सा अटपटा सा ये सवाल बनाया इन्होंने। बट यही है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं। 2.2 200 है, 2.2 बाय 30.01 मिली हेनरी। इसीलिए इन्होंने पीक करंट दे भी रखा है। मैक्सिमम लोड करंट में ना सर्कुलेटिंग करंट का आधा ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम द मैक्सिमम करंट ऑफ ईच कन्वर्टर। ठीक है, चलिए। फुल वेव फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर इज मॉडिफाइड एज अ फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर। P और Q का मैक्सिमम वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, P और Q का बताइए। In case you convert a fully controlled bridge converter to a half controlled converter, what happens to P and Q?
what happens to P and Q? Max P occurs at alpha equal to 0. Therefore, P remains same in फुल एंड सेमी कन्वर्टर, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 पे तो दोनों का ऑपरेशन सेम ही आएगा ना. एट अल्फा इक्वल टू 0 बोथ विल ऑपरेट आइडेंटिकली. So maximum P will remain unchanged. What about maximum reactive power demand? Maximum reactive power. Q max P tan alpha and P tan alpha by 2. This is in full converter, this is in semi converter. Now, डायरेक्टली हाफ का फैक्टर तो हम लोग नहीं कह सकते बेटा. मेरे हिसाब से बी आना चाहिए. ऐसा नहीं कह सकते कि हाफ हो जाएगा रिएक्टिव पावर, क्योंकि अल्फा हाफ हो गया है. तो हम लोग यही कहेंगे कि अनचेंज रहेगा मैक्सिमम रिएक्टिव पावर, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है. ये क्यू का फॉर्मूला हमारे पास, ये मैक्सिमम का नहीं है अभी. क्यू मैक्सिमम इसमें से हमको निकालना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे क्यू मैक्सिमाइज करने के लिए अल्फा को अगर हम ले लें 45, बट 45 से बड़ा लेंगे तो क्यू और बड़ा हो जाएगा. 90 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ 180 पे इन्फिनिटी हो जाएगा. तो वही बात है, मैक्सिमम क्यू तो आपका सेम ही आया ना, इन्फिनिटी. मैक्सिमम तो आप क्यू कितना भी बढ़ा सकते हो अल्फा को बढ़ाने से. ठीक है. तो एज अल्फा इंक्रीजेस क्यू इंक्रीजेस. A three-phase thyristor controlled rectifier is feeding a purely resistive load. Firing angle is 90 degree. AC side is connected to three-phase balance supply. Considering only fundamental input current, active and reactive power. Okay. Active and reactive power on AC side non-zero. Even though load is resistive, Q is not equal to 0 due to harmonics. अब ऐसा लगेगा बेटा कि रेजिस्टिव लोड है, बट फिर भी Q आपका नॉन जीरो आएगा बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स. ओके. नेक्स्ट, थ्री फेज सेमी कन्वर्टर फॉर फायरिंग एंगल लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री. फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट्स for three phase semi converter when alpha is less than 60 degree. The answer is D. V0 does not become negative for alpha less than equal to 60 degree. Therefore, freewheeling diode does not conduct. ठीक है. Freewheeling diode does not conduct. In order to simplify the design of a converter transformer, the two converter in a dual converter should be connected using. Dual converter में दोनों converter कैसे जुड़ेंगे? Anti series. Anti series means both are in series but with opposite polarity. But with opposite polarity. In three-phase semi converter, if firing angle is less than equal to 60 degree, conduction of each thyristor and diode is so 120 and 120. Okay. For alpha less than equal to 60 degrees, since freewheeling diode does not conduct, each switch and diode conduct for 120. A three-phase semi-converter feeds the armature of a separately excited DC motor, supplying a non-zero load torque.
For steady operation, motor current is found to assume zero value at certain instants of time. At such instants, the armature voltage is equal to back EMF. See, when IA becomes zero, IA RA is zero, the inductor voltage is zero, so the terminal voltage is equal to back EMF. Remember, in a RLE load, whenever current is zero, or even in a RE load, whenever current is zero, V is equal to E. The performance of a phase controlled converter is degraded for large values of alpha ES because harmonics increase. As alpha increases, harmonics increase and output voltage reduces. The output voltage reduces. So both are correct. Because as you increase alpha, the output voltage given by a converter is less. So you can say that the performance is going down. Average output of a semi-converter connected to 120 volt 50 hertz converted to, तो बेटा फायरिंग एंगल 90 है तो भी क्या हुआ तमन्ना, रेजिस्टिव लोड है ना, रेजिस्टिव लोड है, अगर फायरिंग एंगल 90 है तो भी क्या हुआ, ठीक है. एवरेज आउटपुट फॉर अ सेमी कन्वर्टर Vm by pi 1 plus cos alpha so it will be 120 root 2 by pi. 4.5 into 12 54. Okay, next. A three-phase converter feeds a purely resistive load at alpha equal to 60. Average load current is 10 ampere. If a large inductance is connected, then the, अगर आप large inductance लगा दोगे at alpha equal to 60, आपके पास purely resistive load है. If you connect a large inductance, then what happens? तो देखो यार, थ्री फेज कन्वर्टर है, अल्फा इक्वल टू 60 फॉर आर लोड, बाउंड्री between continuous and discontinuous. Therefore, V0 is same for R and RL. Therefore, I0 is also same. करंट आपका सेम आएगा क्योंकि V0 बदलेगा ही नहीं ना. अगर अल्फा 60 से बड़ा होता, if alpha was greater than 60, then there will be discontinuous conduction in R load. Okay, so average current will reduce if alpha is greater than 60, because in case of R load there will be discontinuous conduction, you will get more output voltage, you will get more current. Again listen to me carefully. अल्फा अगर 60 से बड़ा होता तो आर लोड में डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन होता, आर लोड में वी नॉट ज्यादा होता और आर लोड का आई नॉट ज्यादा होता एज कंपेयर टू आर एल लोड. फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर एट स्मॉल वैल्यू ऑफ वी नॉट हैव, स्मॉल वी नॉट मीन्स लार्ज अल्फा, तो मोर हार्मोनिक्स, पुअर पावर फैक्टर because FDF is cos alpha, high efficiency notches in the line voltage waveform. इसका यही आना चाहिए. एफिशिएंसी हाई कहां से हो जाएगी, तो आंसर शुड बी ए. ओके, लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म, अगर आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है तो बी भी आएगा, यानी सडन चेंज इन वी नॉट. ठीक है, वी नॉट के अंदर ग्लिच आएगा. चलो नेक्स्ट, थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर, मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर. इन अ ब्रिज रेक्टिफायर, व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर?
Very easy question. Conduction angle of each thyristor in a bridge rectifier 120 degree. Correct? 120 degree. Very good. A line commutated phase controlled inverter is operating at an inverter limit. There can be a commutation failure if it is operating at an inverter limit. Inverter limit is at alpha equal to 90. So it is operating at alpha equal to 90. There will be a failure in commutation if what happens? See, because as frequency increases, time period decreases, less time available for commutation. Very simple. आपको टाइम कम मिलेगा तो कम्यूटेशन फेलियर का चांस ज्यादा है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. For same output voltage, the power factor of semi-converter is better than full converter. Okay. Yes. The single phase semi-converter uses 2 diodes and 2 controlled switch. ये भी बात सही है. लेकिन क्या इसकी वजह से पावर फैक्टर बेहतर है ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं? नहीं. This is not the correct explanation, but both statements are correct. Semi-converter improves the power factor. Semi-converter has 2 switches and 2 diodes. Okay, so that's it for the day. कल फिर से मुलाकात होगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के PYQs के साथ. रेडी रहिएगा. और बेटा जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं ESE PYQ में, उनको याद रखिएगा बिकॉज दे कैन गेट रिपीटेड एंड दे कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट ईयर्स. Because some questions are controversial and very, very different to the theory that we have learned. So you must remember those questions. Okay. So I'll see you again tomorrow at the same time.